Good evening students, welcome to Commerce Campus Audition. Today we will start elasticity of demand. ठीक अछि elasticity रो मीनिंग कोन ना sensitiveness और responsiveness. Sensitiveness और responsiveness रो मीनिंग ना हमें केमिति जानिबा जदि गोटे इंडिविजुअल टर्म ने हमें देखुछु तो sensitiveness माने कोन गोटे पर्सन केमिति इफेक्ट होउची गोटे सिचुएशन को धरि दैट sensitiveness. Responsiveness माने कोन गोटे पर्सन केमिति रेस्पोंड करछि गोटे सिचुएशन को धरि तो डिमांड रो जहां भी फैक्टर्स अछि हला डिमांड जति भी फैक्टर्स हमें पढिलु सेई फैक्टर्स को धरि कि गोटे प्रोडक्ट रो डिमांड ता केमिति चेंज होची सेडा को फैक्टर जण पामु इलास्टिसिटी ता जण हला तो इलास्टिसिटी मींस सेंसिटिवनेस और रेस्पोंसिवनेस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मींस डिग्री ऑफ रेस्पॉन्स इज अंडरलाइन डिग्री ऑफ रेस्पॉन्स माने रेट ऑफ रेस्पॉन्स हला degree of response किंबा rate of response. Due to different demand determining factors, the elasticity of demand explains the change in demand due to change in determinants of demand. एडी लेखो change का केमि डिपेक्ट करिबा डेल्टा साइन change in demand due to change in determinants of demand. Change in demand due to change in determinants of demand. जहा किछ भी determinants of demand हमर अछि सेउडा को चेंज हैला हमर डिमांड केमिति चेंज होछि सेडा हम केमिति जानिबा ना इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड रे जानिबा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड रे जानिबा सेडा कोन हमर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हैला एबे हमर आसियो कोन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड रो टाइप्स फर्स्ट हेडिंग रेडी हैला चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड एडा में एमिति भी लिखि परिबा हैला तो हम जतळ को रेशियो गुटे लिखुछु रेशियो डा में केमिति पढुछु ना 2/1 थिले कोन ना 2:1 वाली कहूछु माने कोन गुटे पार्ट को 2 पार्ट्स इक्विवेलेंट हो जाले भी हमें कहि परिबा बुझिला 2:1 माने कोन इदे सेडा 100/50 हे परिबो 100/50 माने कोन केमिति हैला ना दीटा 50 हेले जायगिरी गुटे 100 हो बुझिला ना तो चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड माने डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड हमर को रेट रे को फ्रीक्वेंसी रे चेंज हेले जायगिरी हम डिमांड ता को रेट रे चेंज होबो सेडा हमें देखिबा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड रे तो ए भीतर हमर आछि कोन थ्री थिंग्स प्राइस इनकम एंड क्रॉस हैला ए टाइप्स रे कोन आछि हमर लेखो टाइप सेडी प्राइस ईडी इनकम ईडी एंड क्रॉस ईडी एडी लिखो proportionate change in demand proportionate change in demand by proportionate change in price proportionate change in demand by proportionate change in price माने प्राइस टा को रेट रे चेंज हेले जायगिरी हमर डिमांड टा को रेट रे चेंज हबो सेडा होची प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड
तापर इनकम इलास्टिक डिमांड कोन कहूची गोटे गोटे हमें फार्मूला लिखिबा देखो एटी कोन कहूची से ना proportionate change in demand due to proportionate change in income देखो proportionate change in demand proportionate change in demand due to proportionate change in income इनकम टा को मात्रा रे चेंज हेले जायगी ना हम डिमांड चेंजेस ना हमें देखि पारे दैट इज शोन इन इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड दीरा जिंस बहुत क्लियर प्राइस ईडी एंड इनकम ईडी बहुत क्लियर रहयो तापरे क्रॉस कोन अछि देखो it shows the proportionate change in demand for one commodity and proportionate change in price of other commodity अच्छा आमे क्रॉस डिमांड काली देखिथिलो क्रॉस डिमांड रे हमें कोन देखिलु टू टाइप्स देखिलु सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंटरी गुड्स सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंटरी गुड्स रे पुणी हमें कोन चेंजेस देखिलु कि गोटे रो प्राइस बढ़ले आउटर डिमांड टा केमिति इफेक्ट होची सेटा देखिलु हैला गोटे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल गोटे इनवर्सली प्रोपोर्शनल काहे कि ड्यू टू द नेचर ऑफ द कमोडिटी रो जहा किछि भी नेचर अछि तार प्राइस रे चेंज रो जहा किछि भी नेचर अछि सेडा को धरि कोन होची डिमांड चेंज होची तो सेम केस आछि कोन हमरो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड रे तो कोन होची ना प्रोपोर्शनेट चेंज इन डिमांड फॉर गुड x बाय प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस फॉर गुड y अच्छा एडी x and y can be either substitute goods or complementary goods substitute goods or complementary goods हैला x और y जहां भी अछि सेटा substitute goods रो केस रे भी स्टडी करियो एंड complementary goods रो केस रे भी स्टडी करियो ठीक अछि क्रॉस ईडी लेखो proportionate change in demand of proportionate change in demand of good x by proportionate change in price of proportionate change in price of good y बुझी पारलो ना नहीं हैला where it is लिखि दियो where x and y can be substitutes or कौन complementary goods substitute or complementary क्लियर सब्स्टिट्यूट भी हे पारियो किबा कॉम्प्लीमेंटरी भी हे पारियो एमे इन डिटेल स्टडी देखिबा एडा होचे हमर बेसिक हैला जा भी क्वेश्चन आसीबो तमरो से फार्मूला रो आसीबो एंड हमें दीडा पार्ट जहा भी पढुचु माने इन डिटेल जहा भी पढछु सेठी अंडरलाइन होबो एंड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू रो जहा भी इंपोर्टेंट सेटा हम चार्ट रे नोट डाउन करबा साइमल्टेनियसली ठीक अछि concentrate it shows the relationship between proportionate change in demand and proportionate change in price it explains how much change in the price is to how much change in the demand proportionate माने कोन how much change in price is to how much change in demand माने 10 rupees price रे चेंज हेले तो कमोडिटीज रो डिमांड चेंज होची इमति हमें कहि परबा माने कोन 30 rupees थिला 20 rupees हैला ता लगी कोन हैला ना केते लोक कोन तीनटा किनुथिले हम चारटा किनुथि तो केते चेंज हैला ना प्रोपोर्शनेट माने एग्जैक्टली डिफरेंशियल अमाउंट कोन सेडा हम सेडी पकेगिरी देखि परबा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ता कैलकुलेट करे को केस रे प्राइस रो केस elasticity of demand in a market great or small according to demand increases much or little for a given fall in the price and diminish much or little for a given rise in price अच्छा तमको ए पार्ट रो क्वेश्चन केमते आसीबो here they are given two names Marshall and John Robinson हैला Marshall and John Robinson
तो जहाँ किसी भी तुम स्टेटमेंट अच्छी सेटा देगी से पचारि पारिबो कि ए स्टेटमेंटटा के देछि हैला दैट्स इट खाली कोन ओवरलुक करिके मन रखि दबो elasticity of demand is a degree of responsiveness of a demand as a result of change in price एटा के कहिछि सेटा के कहिछि खाली टिके देख दबो हैला एटी देखो हमें बे वैल्यूज और टाइप्स देखिबा माने प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड रो हमर केते टाइप्स अछि 5 टाइप्स अछि with the price remaining constant if there is a change in demand underline करो price remaining constant change in demand price constant अछि कोन हला price constant अछि and demand changes then it is said to be perfectly elastic demand it means that the demand may increase or decrease without change in price. Here the value of EP is infinity. The demand curve in the case is parallel to OX axis. देखो parallel to OX axis. It help here types of price elasticity of demand. Immediately note down कर देबो easy हबो नाइले कष्ट हबो constant factor changing factor constant factor and changing factor तापरे लिखो value position of demand curve माने at the end of the chapter तमरो ए पोर्शन रो सब बळे क्वेश्चन आसे जेमति मो पीपीसी कर्व कहितली सेमति ए पोर्शन रो कोन सब बळे क्वेश्चन आसे एंड तमरो जो भी क्वेश्चन आसो ए टेबल रे आंसर थिबो ता टाइप पचारिबो तार वैल्यू पचारिबो टाइप पचारिबो तार एक्सिस रो शेप पचारिबो टाइप पचारियो तार कोन वैल्यू लास्ट वैल्यू देगिरि तमो टाइप पचारि पारियो जहां किछ भी माने शफल करिकि से पचारि पारियो बट स्टिल यू कैन आंसर इफ यू आर एक्वेंटेड विथ दिस टेबल ठीक अछि गुटे करिके हम लेखिया फर्स्ट कौन अच्छी perfectly elastic demand left side perfectly elastic second टा कौन perfectly inelastic third होची relatively elastic and fourth होची relatively inelastic fifth one is unitary elastic अच्छा एडी को एको फैक्टर टा प्राइस कांस्टेंट अछि ना प्राइस फर्स्ट लेखा एडी प्राइस चेंज को फैक्टर्स होची डिमांड वैल्यू केते infinity and it's parallel to OX axis and it's parallel to OX axis here next point हमारा कौन है when there is a change in price first पूरा टेबल ला बने देबा ना गुटे गुटे करके आराम से पूछबा हैला when there is a change in price but there is no change in demand तो constant factor कौन है लाइडी constant factor is demand constant factor is
constant factor is demand and changing factor is pack price. The value is 0. The value is 0. The demand curve is parallel to OY axis. Demand curve is parallel to OY axis. Constant factor कौन हम ready? Demand. Changing factor is price. And value is, and it's parallel to OY axis. अच्छा, परफेक्टली इलास्टिक एंड परफेक्टली इनइलास्टिक रे कोन जिंस हमें देखिलु ना गुटे फैक्टर तो पूरा कांस्टेंट रहि जबो माने से किछि भी इफेक्ट हबनी ताकू धरि के आउट इफेक्ट हेबार अछि सिना से किछि भी इफेक्ट हबनी जेमति कोन स्टूडेंट और टीचर माने केते केते स्टूडेंट थाउजनी केते केते टीचर थाउजनी हैला से टीचर जहां भी को से स्टूडेंट माने किछि इफेक्ट हेबेनी बट केते स्टूडेंट्स थाउजनी जे पूरा भलो बट कोन से टीचर जहां भी से स्टूडेंट माने को बुझियोनी किछि ने तार से गाई गई जाउ हैला वो को कैटेगरी मते कहयनी हैला तब निजे भाबी रख हैला तो परफेक्टली इलास्टिक एंड परफेक्टली इनइलास्टिक केस रे कोन होची ना गुटे फैक्टर ता सबले कांस्टेंट रहबो पूरा पूरी कांस्टेंट रहबो आउट फैक्टर ता ताकू धरि के चेंज हबो रिलेटिवली वर्ड ता जेतळ भी आसी जाउची रिलेटिवली माने कोन कंपैरेटिवली सबले कंपैरिजन हबो माने गुटे आउट रे अधिक हबो कि आउट माने गुटे रे कोन कम हेबा रिलेटिवली वर्ड ता आसी माने मनर ग्रेटर की लेसर सिंबल ता पडिबो हैला एबे हम देखिया रिलेटिवली इलास्टिक एंड रिलेटिवली इनइलास्टिक. If the proportionate change in demand, lekho proportionate change in demand is greater than proportionate change in price. Proportionate change in demand is greater than proportionate change in price. Then it is said to be relatively elastic demand. Relatively elastic demand. It means a little change in price leads to more change in demand. माने टिके भी जदी प्राइस चेंज हेउची डिमांड रो बहुत किछि चेंजेस पड़ा आसुची बुझिला डिमांड रो बहुत किछि चेंजेस पड़ा आसु माने कोन जेमिति कि गोल्ड रो प्राइस ता टिके कमिला गोल्ड रो प्राइस ता टिके कमिला कम कोन डिमांड ता बहुत हाई हे जिवो ने आज कमिले तो आज आगा जाई कि किने देबा काले सेडा ओथरे काली बढ़ जिवो तो टिके भी जदी प्राइस चेंज होची डिमांड इज ग्रेजुअली इंक्रीजिंग हैला सिग्निफिकेंटली इंक्रीज होची ए केस रे कोन होची द वैल्यू ऑफ ईपी इज ग्रेटर देन 1. EP is always greater than 1 and the demand curve slopes downward from left to right. Demand curve slopes downward from left to right. हैला एबे पूरा पैराग्राफ रे जहा किछि भी अछि तमे गुटे साइड रे बुझा पडियला तो एमिति लेखियार रीजन होची तमको कोन माइंड रे बहुत जल्दी क्लिक हबो एंड एडा सबले ट्राई करियो कोन डार्क कलर पेन रे सब जिंस जाको लेखिया बे ताकि कोन ब्रेन जल्दी सेडा रजिस्टर करे लेखिबा में ना proportionate change in demand is greater than proportionate change in price. Eti value kono EP is always greater than 1 and there is a downward sloping curve. हैला एमती मार्क करो downward sloping curve from what left to बुझि पालो there's a downward sloping curve from left to right एबे देखो relatively inelastic देखो if there's a proportionate change in demand if the proportionate change in demand is less than proportionate change in price. Proportionate change in demand is less than proportionate change in price. Then it is said to be relatively inelastic. हैला तो एडी कोन होची ना नेसेसरी गुड्स जेमति कहछि नेसेसरी गुड्स जदि मनरा हमर ब्रेड सबले मनरा हमें अमेरिका रे रहउछु तो कोन हमर ब्रेड ता बहुत अधिक कंजम्पशन होउछि तो ब्रेड रो जदि प्राइस भी सिग्निफिकेंटली कमेला माने से 50 रुपीस रा हमको 25 रुपीस रे भी दो तो हमें कोन बेसी किने आगी नाही बेसी गुटे पैकेट एक्स्ट्रा किने की रखिबा कोन पे ना ताड अधिक हमर कोन रिक्वायरमेंट नाही तो नेसेसरी गुड्स
जहाँ भी अच्छी तार प्राइस जेते भी कमी जाओ जेते भी सिग्निफिकेंटली कम हे जाओ तार डिमांड एते अधिक इफेक्ट होबनी माने तार डिमांड कोन सब बळे अनएफेक्टेड आगा रहबो मोस्टली अनएफेक्टेड रहबो टिके किछि चेंजेस आसी पारियो बट द चेंज इन प्राइस इज सिग्निफिकेंटली मोर दैन चेंज इन डिमांड एडा होछि कोन हमर रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड ए केस रे कोन होछि इट मींस more change in price leads to less change in demand. Here the value of EP is less than 1. EP is less than 1. And the curve slopes downward from left to right. A case रे भी कौन होची the curve slopes downward from left to right. बुझी पालो? But is steeper than relatively elastic demand. अच्छा तुमको difference point अब पचारिबो. Difference in curve behavior. Difference in curve behavior between एडा होची इंपोर्टेंट पॉइंट आ लेखो हैशटैग करेंगे डिफरेंस इन कर्व बिहेवियर बिटवीन रिलेटिवली इलास्टिक एंड inelastic demand रिलेटिवली इलास्टिक एंड inelastic demand कौन ना लेखो inelastic demand curve is steeper 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 or sharper hello सेटा टिके steep रहबो माने it was sloping in this manner but here कोन आउ टिके steep हे जिवो हैला is sharper in few cases लिखिबा मेडा like a proportionate change in demand is less than proportionate change in price hela EP is always less than 1 एडा भी slopes downward from left to right but in case रे कोन बेसी sharp लास्ट देखिबा यूनिटरी माने कोन 1 हमें जान यूनिटरी सिस्टम पढथिलु पर स्कूल रे त हमें डायरेक्टली कोन एडी पके दे परिया EP = 1 यूनिटरी ए केस रे कोन हबो तमे कोन भाबुछ चेंज इन डिमांड = चेंज इन प्राइस जेतिकी डिमांड होची जेतिकी डिमांड रे चेंजेस होची सेतिकी डिमांड कोन सेतिकी चेंज होची प्राइस देखिबा हमें if the proportionate change in demand is equal to proportionate change in price कहां से हमरा unitary elastic demand it means the change in demand and change in price are same exactly same thought few cases रे एमते होची केत्ती की डिमांड चेंज हेले सेत्ती माने सेत्ती की प्राइस चेंज हेले सेत्ती की डिमांड ता चेंज होची किबा के आसी की पचारची कि हमको डिमांड एक्स्ट्रा अछि तो तमे टिके प्राइस कमे दे पारिबो कि सो मे बी से सेलर की मैन्युफैक्चर की होलसेलर जे भी एग्री भी हे होची त हमर कोन से केस रे यूनिटरी इलास्टिक डिमांड आसीबो इट्स अ वेरी हाइपोथेटिकल केस माने बहुत फ्यू केसेस रे एमती होय कि जेत्ती की प्राइस चेंज होले माने 2 टका चेंज करले 2 टका यूनिट मु एक्स्ट्रा नेबी एमती हे पा बुझि पालो Generally, comfort goods have unitary elastic demand. Please mark it important. जब होची को केस रे हमर यूनिटरी इलास्टिक डिमांड अछि अच्छा तमे टेबल में आ गुटे सेक्शन भी ऐड कर परिया एज ए होमवर्क कि गुटे गुटे डिमांड जा भी अछि से डिमांड ता को टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स रे अवेलेबल होछ हैला कीप इट एज ए होमवर्क को केस रे को टाइप ऑफ गुड्स से सेमिति टाइप ऑफ डिमांड ता हमरो एविडेंट होछ सेटा हम देखिबो तो यूनिटरी इलास्टिक डिमांड जा भी अछि सेटा कोन कंफर्ट गुड्स रे अवेलेबल होछ द डिमांड कर्व आल्सो slopes downward from left to right but it is hyperbola rectangular hyperbola माने आगे कोन होतला एमि होतला तापरे कोन हला एमति हला एडा कोन इंदी इट्स अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कोन पे से एक्सिस को टच हे परनी ना जेतु दीडा जग इक्वल लेवल रे चलची हला एमिति आसी कि सेटा इक्वल हेला एक्सेस सहित तो केबे गोडे मिसी पारियो कि केबे गोडे इंक्रीज हे पारे माने ए पर केसटा जहा भी अछि हला पर केसटा जहा भी अछि सेटा कोन हबो either increase हे पारे नाले decrease हे that's why it is a rectangular hyperbola
यूनिटरी इलास्टिक टा टिके इम्पोर्टेंट काहे गेले टू टाइप ऑफ क्वेश्चंस हमर आसुची गुटे होचे हमर शेप रो क्वेश्चन भी आसी पारी और गुटे होचे हमर टाइप ऑफ गुड्स रो क्वेश्चन भी आसी पारी हैला देखो एडी change in demand is equal to change in price. Change in demand is equal to change in price. It's a rectangular hyperbola. It's a steeper curve in the previous case. बुझिपालो पूरा हमर कोन टाइप्स ऑफ गुड्स टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जहां भी अछि टाइप्स ऑफ ईडी पूरा हम एडी कोन डेमोंस्ट्रेशन देखि पारे बुझिलो जहां भी तुम क्वेश्चन आसीबो प्लीज टेल द वैल्यू ऑफ रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड केते वैल्यू इट्स ऑलवेज greater than 1 the value of relatively inelastic demand is always less than 1 unitary elastic demand signifies 1 signifies माने कोन is equal to 1 and perfectly elastic demand's value is infinity how कोन perfectly elastic demand ro 0 किसे पचारिबो which elasticity of demand which price elasticity of demand demonstrates the value of 0 तो कोन को यस perfectly inelastic demand तो टेबल टा मन रखले जेते भी से शफल करिवो तबे कंफ्यूज होबनी कि rectangular hyperbola is evident in which of the type of price ed na unitary elastic जेते भी difficult question हो you can answer okay this is a very important table देखि दियो नेक्स्ट हमर काछ देखो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इनकम ईडी रे अगेन वी हैव दिस थिंग्स हैला इमिति अगर चार्ट करिया with the income remaining constant तबे सेम चार्ट करि परिबो तळे हैला निजे निजे करि परिबो मु खाली लेखौ छी एडी income remaining constant there is a change in demand कोन constant अछि income is constant and there is change in demand it means the demand may increase or decrease without change in income the value of EY is infinity same to same pura so EP and EY and the thing is parallel to OX axis तापरे कोन होची if there is no change in demand जहां भी हो इनका डिमांड रो किछि भी चेंज होनी माने it means the income may increase or decrease but demand is constant माने demand is constant but income may increase or decrease income में increase हो decrease हो demand कौन होची demand ता सब बड़े पे constant आगा रखोची तो EY is equal to 0 and curve एडी कौन जे parallel to OX axis अच्छा नेक्स्ट तमे टेबल करियर अछि निजे निजे हैला प्लीज मेक द टेबल बिकॉज़ इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू ओनली एग्जाम आगो दिन तम आगा एटा बेसी हेल्पफुल हबो तो एडी कोन डिमांड कर्व is parallel to OY axis तापरे देखो relatively elastic income demand the proportionate change in demand कोन होची एडी proportionate change in demand the proportionate change in demand is greater than proportionate change in income it's said to be relatively elastic income demand माने टिकी भी जदी इनकम रे चेंज हेउची तो बेसी चेंज हबो कोन डिमांड रे बेसी चेंजेस पड़ा तो EY is always greater than 1 and demand curve slopes upward from left to right with relatively flatten in shape कोन हबो एटा होछ त डिमांड कर्व this is the demand कर्व माने कोन फ्लैट रहिबो हला it's not steep it's flat तो फ्लैटरली कोन हबो ऊपर को जिवो relatively inelastic income demand रे कोन होची proportionate change in demand is less than proportionate change in income
proportionate change in income माने कोन आपको फाइनेंशियली डिसिप्लिन अछि डिमांड जत्ते भी कोन चेंज हो सॉरी प्राइस टे केते भी चेंज हो तार डिमांड जत्ती दरकार सेती अगर से किछि इफेक्ट हो हैला आगो केस रे कोन होतला इनकम टिके भी चेंज हे होतला तो कोन डिमांड से बड़े बड़ी पड़छ हैला EY is less than 1 EY is less than 1 and demand curve slopes upward from left to right demand curve slopes upward from left to right हैला किमिति ना स्टीपर रे एडा केमति होतला फ्लैट रे होतला एडा स्टीपर होतला प्लीज मार्क द शेप्स हियर एडी कोन कहै छी फ्लैटर अगे इट्स अ डिफरेंशियल पॉइंट्स अगर तमर इंपोर्टेंट एडी कोन कहै छी स्टीपर बुझालो यूनिटरी इनकम माने यूनिटरी इलास्टिक इनकम डिमांड कोन ना proportionate change in demand is equal to proportionate change in income so EY is always is equal to 1 सबड़ा 1 then the demand curve in this case also slopes upward from left to right directly एडी किछि भी माने इफेक्ट होनी हैला then आछे हमरो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एडर किछि टाइप्स ने दिस इज अ गुड न्यूज़ फॉर यू बुझिले एडर किछि टाइप्स ने तो तमे कोन जहाँ भी तमे लिखिबो फर्स्ट लिखिबो ईडी रो मीनिंग तळे आसबो तमरो टाइप्स जहाँ किछि भी अछि मो सिधी चारटा लिखिली ता तळे कोन लिखिबो दीड जगह संगे संगे लिखि देबो हैला तमे और इजी करिन अछि कोन करिमो ना सब फैक्टर्स इमति रखिबो कर्व जेतु सेम अछि हमरो कर्व दीडा जे केस रे सेम आग अछि तो कर्व रो जहाँ भी येडा अछि टेबल माने अछि सेटा तमे कॉमन रखि परियो प्राइस एंड इनकम केस हैला इमति करी कोन तमे गोटे टेबल कर दे पारे जत्ते कम करी कि लिखिबो सेते अधिक रिविजन करि पारे बुझि पालो आई होप इट्स क्लियर देन आसे हमर मेथड्स जोडा कि हमर कोर्स रे नाही हैला दिस इज नेवर आस्क्ड इन अ क्वेश्चन बस देखियार अछि देखि पारिबो कि कोन अछि केमते अछि जिंस हैला अच्छा टू ओवरलुक एडी कहि दोछि कोन खाली बिकॉज़ जिंस छाडियार हमर कोर्स रे नथ्य से ना जिंस छाडियार हम कोर्स रे नाही हैला तो measure the ED firstly we should find out the change in demand due to change in price in percentages एडी खाली अंडरलाइन कर दियो कोन परसेंटेज मेथड he is using percentages हैला देन आसे हमर टोटल आउटले मेथड रे कोन होची द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड टोटल एक्सपेंडिचर कैन बी डिसाइडेड इट डेमोंस्ट्रेट होची रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड टोटल एक्सपेंडिचर अच्छा दिस कैन बी अ पॉसिबल क्वेश्चन फॉर यू माने टोटल प्राइस एंड टोटल एक्सपेंडिचर टा को जिंस रे को टाइप ऑफ ईडी मेथड ऑफ कैलकुलेशन रे डेमोंस्ट्रेट होची ना एक्स एंड टोटल आउटले मेथड प्लीज राइट हियर demonstrate relation between price and total expenses हैला जदि भी क्वेश्चन पचारला यू आर सेफ तो एडी से गुटा जिंस कहूची कि टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीजेस विथ फॉलिंग ऑफ द प्राइस एंड डिक्रीजेस विथ द राइजिंग ऑफ प्राइस अच्छा प्राइस कम हेले टोटल एक्सपेंडिचर कोन पे इंक्रीज होची एंड प्राइस बढ़िले कोन पे डिक्रीज होची सेडा कोन ईडी डिसाइड करबो से ईडी हिसाब रे कहूची माने डिमांड और प्राइस कंपेयर करला अलगो हम एक्सपेंडिचर टा केमिति इफेक्ट होची से कहूची जोडा कि बहुत कंफ्यूजिंग जिंस हैला बहुत किछि फैक्टर्स कोन आछि हमरा इनती स्टेटमेंट नै अच्छा गोटे लोक थिबो तार इनकम जत्ते भी हो ही इज नेवर कॉम्प्रोमाइजिंग एनीथिंग जहाँ किसी भी तार डिमांड अच्छी सेटा से फुलफिल करछ बिकॉज़ सैटिस्फैक्शन इज इंपोर्टेंट टू हिम आउ केते लोक अछंदी मे बी कुमुटी हैला नॉट ऑफेंडिंग एनीवन बट तांग कोन कुमुटी नथिले के जणर कुमुटी नेचर थाउच हैला जत्ते की भी डिमांड हो इनकम जत्ते बढ़ू कि कोन बढ़ू हैला तांके कोन करे तांको डिमांड टोटली सैटिस्फाई करबे कोन पे ना तांको को पैसा एफिशिएंट बेस हैला सो दिस इज अ थिंग एबे देखियो पॉइंट मेथड रे कोन होची मेजर एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑन द डिमांड कर्व अच्छा आमे गोटे डिमांड कर्व रे ये प्लॉटिंग द डिमांड कर्व टा एक अछि मनर जनरली इट्स इन दिस शेप तो आमे पर्टिकुलर पॉइंट्स प्लॉट करछु एमिदी पॉइंट्स प्लॉट करके कोन करछु से जिनसडा कोन डेमोंस्ट्रेट करछु माने केमिति आस्के सेडा अपर सेगमेंट लोअर सेगमेंट फार्मूला रे पकई के आमे आनि पारि माने एवरेज कर लाली बुझिलो
Then आसे पर arc method टा कौन big changes in demand and prices, it's not possible to measure the ED by the point method, so arc method is introduced. So arc method is introduced due to the drawbacks of possible question कौन ही पारे मु कहि दोची due to the drawbacks of what point method. Point method रे बेसी बड़ calculations हेई पारिबनी, that's why we have introduced arc method. बुझि पालो? एबे देखो importance of ED तमरो ए चाहा किछि गप देइची से लास्ट पैरा गुटे खाली important हैला देखो analysis से गुटे जिंस कोछि level of output corresponding to which price elasticity of demand is relatively elastic because the firm earns positive marginal revenue only at that level of output. से कहूची कि हमरो जो price ED अछि सेडा greater than 1 हैला अलगो business earns maximum profit हैला एडा इकोनॉमिक्स रो एनालिस्ट जे भी अछंदी से मानक पे से माने कोन केमिति कैलकुलेट करंती कि बिजनेस को केबे मैक्सिमम प्रॉफिट आसे तमे मनोर गुटे बिजनेस रो सीएफओ हेलो केबे हैला सीएफओ हेले कोन हबो से पछारियो कि हमरो को पर्टिकुलर स्टेट एज एन इकोनॉमिक्स तमे को कि को पर्टिकुलर स्टेट रे आमे मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करि परिबो इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू रो तामे कोन कहिया ना प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जेपे भी ग्रेटर देन 1 रहउची देन ओनली वी कैन अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट. तो टोटल इंटरप्रिटेशन टा होची सेडा हैला देखो तापर इंपोर्टेंस ऑफ ईडी कोन कोन पे इंपोर्टेंट ना देखो इफ द प्रोडक्ट हैज गॉट ईडी द बिजनेस मैन फिक्सेस लेस प्राइसेस देखो मोर ईडी बिजनेस कैन फिक्स लेस प्राइसेस कम प्राइसेस से फिक्स करो हैला आ लेस ईडी थिले एंड वाइस वर्सा लेस ईडी थिले कोन हबो प्राइस टा मोर फिक्स हबो तापर देखो मोनोपोलिस्ट if monopolist fixes the higher price in one market in which ED is less and lower price in more ED elastic demand market for the same thing or same good तो कोन monopolist जे भी अछनी तांके higher price fix करिवे कोडा रे ना ED जेतळ को लेस हबो higher price when ED is less and lower price when ED is हैला मोनोपोलिस्ट माने कि आमे लेटर सेशंस रे देखिबा मार्केट चैप्टर रे मोनोपोलिस्ट माने गुटे लोक जे कि पूरा मार्केट रो राज करछ हैला ही इज हैविंग द कंट्रोल ऑफ द एंटायर मार्केट से जहां भी प्राइस फिक्स करला चले ही इज अ मोनोपोलिस्ट हैला मोनोपोलिस्ट भी ईडी केमती यूज करबो ना ईडी जेरो तार कम थिबो तो से कोन करे हाई प्राइस फिक्स करबो एंड ईडी जेतरो तार अधिक थिबो लोअर प्राइस फिक्स करबो सो दीस आर द पॉसिबल क्वेश्चंस माने बिजनेस हाउस रे केबे कम प्राइस फिक्स करि परिबो केबे को ईडी रे तार मैक्सिमम प्रॉफिट हे परिबो तो एडा तुमको डायरेक्ट क्वेश्चंस आसीबे तो मु क्वेश्चन फॉर्मेट में तुम लिखि दे तापर देखो डिटरमिनेशन ऑफ फैक्टर प्राइसेस द कांसेप्ट ऑफ ईडी आल्सो हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग द प्राइस ऑफ वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फैक्टर्स हैविंग inelastic demand gets higher and factors having elastic demand gets lower price से कौन कहूची ना factors having inelastic demand gets higher prices factor जोड़ा भी अच्छी जदि तारो inelastic demand अछि and एडी elastic demand अछि inelastic demand थिले कोन हबो तारो प्राइस हाई थिबो आ एडी प्राइस बुझि पालो then देखो route for international trade if demand exports of a country is inelastic the country will enjoy favorable terms of trade लेखो एडी inelastic हेले कोन हबो ना favorable trade terms but if the exports are more elastic than imports then the country will lose in terms of trade so the exports are greater than imports then trade loss
हैला इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू जनरली तो नहीं बट इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू रो एक्सपोर्ट्स जदी इंपोर्ट्स रो अधिक होउची हैला दैट ट्रेड लॉस टा ही पारिबो. The concept of ED also enables the government to decide as to what particular industries should be declared as public utilities to be taken over and operated by the state. अच्छा एडा गुटे ट्रांजिशनरी पॉइंट टा हैला गवर्नमेंट जहां भी गुटे इकोनॉमिस्ट को जदी मनरा अपॉइंट करछि तो से कोडे कैलकुलेशन हिसाब रे धरि कि से कहि परियो कि तमे एडा को पब्लिक सेक्टर यूनिट रे डिटरमाइन करि परियो कि डिक्लेयर करि परियो बिकॉज़ इट्स परफॉर्मिंग वेल. तो इकोनॉमिस्ट जेतळो को अप्रूव करछि कि ए मतलब ए पर्टिकुलर यूनिट टा बहुत आउट परफॉर्म करछि मार्केट को सो सेतळो को गवर्नमेंट ताको पब्लिक यूटिलिटी एली डिक्लेयर करि देबो. पब्लिक यूटिलिटी डिक्लेयर करले इट विल हैव सर्टेन टाइप ऑफ व्हाट प्रिविलेजेस ताको बहुत किछि प्रिविलेजेस मिलेबो. तो ए जिंस को धरि कोन ईडी रा हमको हेल्प करूछि. तो सो दिस इज अ ट्रांजिशनरी पॉइंट बट तमरो जेति की पॉइंट्स सब पाखरे लिखि छि से पॉइंट तमरो डायरेक्ट क्वेश्चन दा बिल्ड अप पेज ठीक अछि. डिटरमिनेंट्स नेक्स्ट क्लास रे देखिबा. थैंक यू.